दिवाली टू एवरीवन एंड आई होप कि आपका धनतेरस बहुत अच्छा गया एंड कल दिवाली है. सो दिवाली में यूजुअली जब हम मेकअप करते हैं इट्स यूजुअली लाइक फुल फुल कवरेज एंड पूरा क्लीन वन स्लेट मेकअप. सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फुल कवरेज बेस, हाउ टू अचीव अ फुल कवरेज बेस. मैंने सिंपल सा आई लुक कर लिया है ऑलरेडी. आई हैव अप्लाइड अ लिटिल बिट ऑफ लिप बाम ऑन माय लिप्स. दिस इज नॉट अ लिपस्टिक दो. Now I'm going to teach you how to get a full coverage base with the most minimal amount of product and most minimal tools. ज्यादा चीजें यूज नहीं करनी है, जो आपके पास अवेलेबल है वो हम यूज करें. ओके. सो सबसे पहले मैं करूंगी मॉइस्चराइज मेरे फेस को. वेन एवर यू आर गोइंग टू डू अ फुल कवरेज बेस, ट्राई टू मॉइस्चराइज योर स्किन बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाने वाले हो और बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर प्रोडक्ट और हेवीनेस आने वाली है. सो टू create a barrier and to moisturize your skin, apply a good amount of moisturizer. So as I always suggest, हमेशा आपका आई मेकअप पहले हो जाना चाहिए, so that you have a clean slate to work on. Otherwise क्या होता है, आई शैडो जो है वो नीचे गिरता है पूरा, and when your base is done you cannot clean it, and then फिर पूरा आपका अंडर आई जो है वो डार्क दिखता है. मेक श्योर आपका मॉइस्चराइजर जो है वो पूरा अंदर अच्छे से सेट हो जाए. Do not apply products on top of a very wet moisturizer. स्किन के ऊपर अगर वेटनेस है, डैम्पनेस है, तो आप प्रोडक्ट्स मत लगाइए, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेट नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं स्किन पर. So let your skin drink the moisturizer first and then आप लगा सकते हो अपने प्रोडक्ट. So you can see now it's moisturized but it's not गीला. So I'll go ahead with my next step. I will be using an orange slash brown shade, peach shade, to highlight to cover my dark circles. I'm just going to take this shade and हल्का सा मैं लगाऊंगी and blend. If you are dark skin tone person, go ahead with a little bit of darker orange. And अगर आप light skin tone हो, तो go ahead with peach. रेड किसी भी केस में मत लगा. और जहां है हमारा पिगमेंटेशन हम वहीं पर लगाएंगे. Why do we do this? Is because orange cancels out the pigmentation, cancel out darkness. तो जहां पर भी आपको डार्क इफेक्ट दे रहा है, आपका कंसीलर लगाने के पहले यू आर सपोज टू अप्लाई एन ऑरेंज कलर करेक्टर. और मेक श्योर कि आप बहुत ही कम लगाएं. डोंट fill up your face with this orange color. If you don't have an orange color corrector, you can use a concealer which is 3 to 4 shades darker to your skin. That will also work well. तो जो हल्की सी यहाँ पे पिगमेंटेशन है, you can see this area. So I just applied that. कलर करेक्टर को भी ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है, जितना आपको लगता है इट विल हेल्प टू कवर. सिर्फ एजेस ब्लेंड करने हैं, नॉट द एक्चुअल प्रोडक्ट. एंड आई लाइक टू अप्लाई अ लिटिल बिट ऑन फोरहेड. जिस तरह फोरहेड जो है वो हल्का सा डार्क है. ओके. सो वी हैव कलर करेक्टेड राइट नाउ. आप देख सकते हो इसमें आपका पिगमेंटेशन नहीं जाने वाला. You have to wait for the next step for everything to be covered. But this is how you do the color correction process. Now we are going to neutralize it. Next step है हमारा neutralization. So neutralize करने के लिए you will need a concealer which is either exactly your own shade
या फिर वन शेड डार्कर वॉक्स. सो आई एम यूजिंग द वेट एंड वाइल्ड इन द शेड मीडियम डीप टैन. ये शेड जो है वो बंद हो गया है प्रोड्यूस, बट यू कैन यूज मीडियम टॉनी और एनी अदर डार्क शेड विच इज अवेलेबल. हल्का सा मैं उसी के ऊपर लगाऊंगी. दिस स्टेप इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजिंग. ओके, न्यूट्रलाइजिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा हमने ऑरेंज शेड लगाया है उसको ही हम न्यूट्रलाइज करेंगे ज्यादा, ताकि व्हेन यू अप्लाई फाउंडेशन वो पूरे फाउंडेशन के साथ ब्लेंड होके ऑरेंज ऑरेंज ना दिखना चाहिए. फॉर द स्टेप ऑफ कलर करेक्शन मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ मेरे फिंगर्स ही यूज करूँ, बिकॉज फिंगर्स से क्या होता है, ब्लेंड भी इजीली हो जाता है. एंड आपको प्रेशर भी समझ में आता है कि आपको कितने हल्के हाथ से ब्लेंड कर, प्रोडक्ट भी वेस्ट है. आप देख सकते हो जो यहाँ पे मार्क था दैट इज ऑल गॉन. दैट हाउ यू कलर करेक्टेड न्यूट्रलाइज. ये आपकी स्टेप अगर आपने अच्छे से कर दी, इसके ऊपर आप फाउंडेशन लगाओगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. और इसी को फुल कवरेज बोलते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग. इससे क्या होगा, आपका स्किन ऐसे का ऐसे रहेगा फॉर द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. सिमिलर विथ माई. बट मेक श्योर कि आप इस स्टेप पे कंसीलर आपके शेड का या फिर एक शेड डार्कर यूज कर रहे हो. डोंट यूज समथिंग विच इज लाइटर, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी जो आपने कलर करेक्ट करने की कोशिश की है वो फेल हो जाएगी. सो यू कैन सी जहां पर भी मैंने लगाया था एवरीथिंग इज कवर्ड. नाउ कम्स फाउंडेशन. नाउ मेरे पास अभी दो फाउंडेशन, ठीक है, अभी ओकेजन वाइज बताती हूँ. अगर आपको ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा, ओके, यू कैन अप्लाई समथिंग विच इज एग्जैक्टली योर ओन स्किन टोन. बट अगर आपको हल्का सा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, you use something which is a little one shade lighter to your skin, because foundations anyways oxidize हो जाते हैं. So you can use something which is a little yellower, but आपकी skin tone वैसी होनी चाहिए. If you're pink undertone, don't use a yellow shade concealer foundation. So I'm using today the Lakme 925 Primer Plus Matte Perfect Cover Foundation in the shade W240 Warm Beige. Okay, ये मुझसे सिर्फ एक शेड लाइटर होगा, दिखने में अच्छा खासा लग रहा है, बट इट्स जस्ट वन शेड लाइटर. इफ यू आर यूजिंग योर ओन फाउंडेशन, यू कैन गो अहेड विद दिस. अगर नहीं तो प्लीज डू नॉट कंटेमिनेट द फाउंडेशन एंड द बॉटल. बैक ऑफ द हैंड लीजिए and apply it on someone else. Don't use the same thing on someone else. I'm going to take my usual powder puff and start blending. दिस फाउंडेशन इज ऑलमोस्ट फुल कवरेज है, सो यू कैन यूज इट. अगर आपको ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, आप ऐसे के ऐसे इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हो. इट विल कवर, बट वी वांट दैट इवन टोन स्किन, सो इसीलिए हम वी डू द एंटायर कलर करेक्शन प्रोसेस. एंड इट्स अ वेरी 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 लाइट वेट फाउंडेशन. लैक्मे के प्रोडक्ट्स मुझे इतने कभी पसंद नहीं आए, बट सिंस दे आर स्टार्टेड दे आर 95 रेंज. 95 रेंज इज अ हिट. ओके, तो मैंने जैसे बोला आपको कि लगाते वक्त आपको अलग लग सकता है कि दिस इज अ वेरी लाइट शेड, बट वंस यू ब्लेंड इट, इट्स अ परफेक्ट मैच.
बट यू कैन सी जस्ट अ शेड लाइटर जो कि ऑक्सीडाइज होगा वंस यू अप्लाई पाउडर एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. Okay, the foundation is blended and it's set perfectly. You can see this is my natural texture. So texture को भी हल्का सा blur कर देता है because this is primer plus matte. So इस foundation में ही they have infused primer जो आपकी skin को बहुत ही smooth effect है. So you can go ahead and purchase this. Now we'll go ahead with all the cream products. So इसके बाद मैं लगाऊंगी इसी का concealer, which is the Lakme 925 Primer Plus Matte in the shade 02 Nude. This is in a combo. मैं usually combos में लेती हूँ क्योंकि you understand what the shade can be. So this is one combo which I have, and and, and this is one combo which I have. So this both are Wet and Wild, and that both are Lac. I'm using 02 in Lakme 925 concealer. Now this concealer is wholly used only for brightening. तो इससे आपको कुछ ज्यादा कवरेज नहीं मिलने वाला. यू आर सपोज टू अप्लाई इट ओनली ऑन एरिया जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, विच इज यूजुअली अंडर द आईज. सो मैंने वहां पर लगा दिया. ज्यादा भी मत लगाना बिकॉज यू ऑलरेडी हैव कलर करेक्टर, यू हैव यूटिलाइजर, यू हैव द फाउंडेशन. नाउ यू कैन सी इट्स कंप्लीटली कवर्ड. आप देख सकते हो कि पूरा अच्छे से कवर हो चुका है. एकदम क्लोज आने की भी जरूरत नहीं बिकॉज एनीवेज हम वहाँ पे आई शेडो, हमारा लोअर आई शेडो लगाने वाले. सो दिस इज मोर देन इनफ. नाउ बाय द टाइम you do this, let's go ahead with the cream products. For cream again full coverage base तो हो गया हमारा, बट इसको हम अब थोड़ा सा पेंट करेंगे. So using some contour, taking the powder puff and blending it real quick. क्रीम प्रोडक्ट्स है तो आप रिस्क मत लेना, फटाक से ब्लेंड कर. Blend it. Same with the jawline. Okay. If you can see यहाँ पे हल्की सी shadow आ गई है. That is what contouring means. So हम नीचे जब देख करेंगे that my cheekbone will be uplifted. यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं है तो आप देख सकते हो कि there's nothing to. और इसे ज्यादा अंदर भी नहीं लेके आना. जितना बाहर रख सकते हो उतना बेटर है. Okay. Same goes with the nose contour. I'm going to show you. Okay. Okay. And हल्का सा on the.
This will give you a very, very, very nice um, nose contour effect. So let's blend everything. ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो फिर वो तो अजीब दिखेगा ही कि आपने कुछ तो लगा है. ओके, सो contour done. Now I'll apply some cream blush. So cream blush तो आपको पता ही है, मेरे पास मेरी stick blush है. Just above the contoured area. You can completely use a beauty blender, guys. This is my current obsession, a powder puff. Okay. अब हम करेंगे हमारा फेस सेट बेक बिकॉज हमारी क्रीम प्रोडक्ट्स एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स सारी हो चुकी है. सो बिफोर सेटिंग आई विल अगेन गो विद अंडर आई क्योंकि यहाँ पे क्रीसेस जमा हो जाती है. सो जस्ट जहाँ पे भी आपको लगता है कि क्रीसेस जमा हो सकती है, गिव इट अ हैंड. नाउ विल गो अहेड विद द सेटिंग. सेटिंग के लिए यू गाइस नो, मैं कुछ भी लुक हो जाए आई विल ऑलवेज यूज दिस मास ट्रेंड सेटिंग पाउडर. विल बी बेकिंग माई फेस विद इट बिकॉज आज तो हमने फिर भी बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स लगा लिए. सो वी हैव टू बेक. ओके, एंड फोरहेड पे तो बस बस रैंडमली लगा दो. I will keep this for about 15 to 20 seconds, everything. Again, Mars Trend Setting Powder in the shade Banana. And now I'm going to take my powder puff and press everything in it. लोग यूजुअली डस्ट ऑफ करते हैं, मैं डस्ट नहीं करती. आई आई प्रेस इट इन माई. ओके, एंड लास्टली द फोर्थ. आप देख सकते हो इस पाउडर से मेरी स्किन कितनी एकदम फिल्टर आ जाता है मेरे फेस को एक. सो दैट इज व्हाट अ लूज पाउडर डज. इफ इट्स अ गुड loose powder and a setting powder, it will give you this very flawless matte look as well as a very flawless filtered look. Now let's go to the powders. So for the powders I'm using my Mars All I Need makeup kit जिसमें मुझे ये तीनों शेड्स मिल जाते हैं. So I'll just go with my powder puff, take my bronzer, add it. Okay. And आज मैं मेरे forehead पे थोड़ा सा bronze करूंगी. I usually love bronzers because बहुत ही सन टैंड वाला इफेक्ट देते हैं वो लोग. Okay, bronzer done. Now we'll go ahead with the blush.
वेरी लाइट. आई डोंट वांट टू मच ऑफ ब्लर. हालांकि फेस्टिव है तो आप लगा सकते हो. Blush done. Now the final step is your highlighter. So I'm going to use this highlighter. अच्छा खासा. Below the chin, below the forehead. जहाँ पे आपकी नेचुरली आपकी स्किन पे लाइट गिरती है वहां पे ही आपको हाइलाइटर लगाना है, पूरे दुनिया भर में नहीं लगाना. टेक बैक योर पाउडर पफ. इन सबको हल्का सा. You can see highlighter gives you that very very glowy finish. अगर आपको complete matte look चाहिए then do not go ahead with any highlighter because that will always give you a very glowy finish. But other than that वो powder ने पूरा set कर दिया है मुझे and मुझे highlighter से glow भी मिलता है. So that is what you usually need. Okay, this is your full coverage base. इसके अलावा you just need to set it with a setting spray and you're good to go. You are very much good to go. I'll just complete my look in few steps. तो मैं मेरी लोअर लैश लाइन कर देती हूँ. Lower lash line, I'm going ahead with a. Okay. आप लाइटर शेड्स भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर whatever eye look you're doing. अगर आपको नीचे ज्यादा कलर नहीं पसंद तो you can go ahead with a lighter shade as well. But मेरी ऊपर का कलर जो थी डार्क थी इसीलिए मैंने नीचे का कलर भी. I'm not applying mascara today because I don't feel like मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव है आज. So I'm not applying mascara, but this is the look. And now I'm going to apply some lipstick. मेरी आंखें ड्रामेटिक है मतलब सिंपल है बट यू कैन सी दैट इट हैज ब्लैक, इट हैज डार्क कलर, इट्स क्वाइट ड्रामेटिक. So I'm going to go ahead with a lighter lip only. The darker lip liner just on the bottom and just on the cupid's bow हमेशा will ensure that you are having good plumpier lips. अगर आपको वैसे plumpier lips पसंद है तो please apply lip liner over there. आजू बाजू में लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं. I don't know why the shade looks very orangey, like बहुत ही ज्यादा येलो दिखती है on this screen, but it's not. And आज मैं करूंगी some. This is my favorite gloss, Baby Gloss by Makeup Revolution. बहुत ही लाइट वेट है. चिपकता तो है, हर ग्लॉस चिपकता है. You can't deny that fact.
Okay. I don't know why this color is looking like this, but in reality, it's such a pretty color. वहाँ ज्यादा ही कुछ अजीब लग रहा है, so ignore that fact. But this is your full coverage. आप इसे शादी में, आपकी खुद की भी शादी में, this is what they do. There's nothing difference. There might be steps here and there, जैसे कि your skincare would be really nice. Your they would apply sheet masks to you. Baki, everything is the same. The steps are same. The products might differ, but this is what they do as well. Blush की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो सकती है because you are a bride. Your eyes have a good amount of eyelashes, smoked kajal, everything. So more or less it's the same thing. So आप अपनी शादी में, किसी और की शादी में, पार्टी मेकअप में, आपको कुछ फैशन शोज है, आपके शोज है, आप उसमें टेलीविजन पे अगर आपको करना है, आप ये कर सकते हो. दिस इज योर फुल कवरेज बेस. दिस इज हाउ यू अचीव. नाउ आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो नो मेकअप मेकअप लुक सिखाया था, या मैंने जो इजी ग्लैम दिवाली मेकअप लुक सिखाया था, इट्स वन एंड द सेम. लाइक दिखने में तो ये सेम लग रहा है, इसमें स्टेप्स बढ़ा के या कम करके क्या ही फायदा हो. द फायदा इज कि ये ज्यादा स्टे करेगा. दैट द कंसीलर इज जस्ट अ कंसीलर एंड इट्स जस्ट अ फाउंडेशन. तो वो ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं. आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो उभर कर दिखना चालू होगी even after like 1 or 2 hours. This will make sure and this will ensure कि आपका जो पिगमेंटेशन है वो ज्यादा टाइम तक नहीं भा रहा है. So this locks your skin or your pigmentation, your coverage for about 6 to 7 hours. Like आप बिंदास घूम सकते हो. इसीलिए शादी वगैरह में हम ऐसे मेकअप करते हैं, सो दैट यू नो वट एवर द सिचुएशन है, कितना पसीना आए, कितना कुछ भी आए, द मेकअप स्टेज एंड द कवरेज इज स्टिल फुल. सो दैट इज द डिफरेंस. द टाइमलाइन, द किस प्रोग्राम के लिए आप कर रहे हो, इसीलिए हम हमेशा पूछते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट द क्लाइंट, कि आप क्या, व्हाट इज ओकेजन. क्योंकि अगर आप आपकी शादी है ना, अगर आपने पार्टी मेकअप बोल दिया या आपने नॉर्मल मेकअप बोल दिया, लाइक नो मेकअप मेकअप लुक, तो हम वैसे कर देंगे एंड इट वोंट स्टे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. एंड कैमरा में सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है. So this is what stays for the longest time, and that is the difference between the other looks and this. Okay. So यहाँ खत्म होती है हमारी दिवाली सीरीज. दिस वाज एवरीथिंग इन दिवाली, एंड ये दिवाली सीरीज थी. तो आपको अभी कल जो भी करना है, you want to implement any of these looks, you want to implement any of these particular subjects which I taught, you can do that. And if you're doing it, please take a selfie and tag Pankhuri on Instagram. Okay. Otherwise, अगर आपको कुछ भी questions है तो आप definitely comments में डाल ही सकते हो. We'll be checking that and we'll revert back to you. And दिवाली आपकी अच्छी हो. मैं इसके आगे वाले सेशंस जो भी करूंगी, आई ट्राई टू मेक देम शॉर्ट एंड आई ट्राई टू मेक देम मोर इंटरैक्टिव एंड मोर इंटरेस्टिंग. अलग अलग चीजें मैं लेके आऊंगी, जैसे कि आई लुक्स डिफरेंट, आई प्ले विद डिफरेंट कलर्स. आई क्योंकि बेस तो मैंने आपको सिखाई दी है. अब नो मेकअप मेकअप लुक बोलो, नॉर्मल मेकअप लुक बोलो, फुल कवरेज बोलो, मैंने सब कुछ सिखा दिया है. सो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग विच इज मोर इन डिटेल्स, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई लुक्स, how to do your eyebrows, how to create lip shading and everything. So product knowledge, brush knowledge, tools knowledge, everything. तो मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेके सिखाऊंगी. This was only for Diwali based. This was a Diwali special series. I hope you loved it, and thank you for watching my session. This is all for today. I hope you liked this, and bye bye. Happy Diwali.